Hello and welcome to the highlights of Match 10, the all-important game of the table toppers. It's Northern versus Sindh, and the toss was won by Sindh Cricket. And no surprises, Sarfaraz wanted to chase, putting Northern into bat. Let's join our commentators. Suhail Khan to Zishan. Good start by Suhail Khan. Nicely worked away. Should be a couple again. There's a big gap there on the onside. Bat on ball, bad line. You've got to pay for it. 4 leg buys. Mir Hamza, but the line was wrong. Started off too straight, and Sarfaraz have very little chance to stop that, and that's better inside edge. That's unlucky. The runs will be added to the total. There was nothing wrong from Mir Hamza there. It was just pure luck from the batsman. Cost him 4 again. 3 boundaries in a row. Edge missed by the fielder there. That'll run down for 4. Wouldn't be wrong to say they're leaking runs at the moment. Gone over the keeper. That's another boundary here. Not much you can do about that. Can't complain to the bowler anymore. Yeah, unfortunately, right length ball, but unlucky. It was a lucky shot, but that's how T20 cricket goes. Fortune favors the brave. Ball jumped a little bit on Zishan, but he managed to get an edge on it and found the gap as well. Unlike this one, this is very high in the air. Might go a bounce or 2. And that's, I don't know about that effort. He's pushed the rope with his body, so we'll have to go upstairs, I'm pretty sure. That's a poor effort from Arslan. Might just cost a boundary to Sindh. Yes, it does. In the air, and there's an opportunity here for deep square leg, and that's been put down. Or has he caught it? Finally, Sarfaraz confirms it is. The way the reaction was, he was looking down into the ground as if he dropped it. So that's the first wicket gone. Hasnain strikes. Wicket was needed, and what Hasnain provided to Sarfaraz, it was a high catch, and Arslan Ali took it very nicely. जी हाँ, और उनको खुशामदीद कहा। हैदर ने एक बहुत बड़ा छक्का लगाकर, और आमतौर पर अपनी इनिंग से आगाज़ में ही ये मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के एरिया में ऐसा शॉट खेलना इनको पसंद है। अपनी उस रवायत को बरकरार रखा है जो इनने शुरू की थी ओल्ड ट्रैफर्ड से। स्ट्रेंथ है इनकी ऑन साइड। ज़िशान ने इस बार ऊंचा शॉट खेला और ये बुलंदो बाला छक्का। इस बार पहुंच गए थे। गेंद को विद द स्पिन खेला पिच पर आते हुए। ज़िशान बहुत जोरावर क्रिकेटर हैं। इंतहाई ज़बरदस्त इस्तेमाल किया उन्होंने कदमों का। इस बार फाइन लेग की जानिब रवाना किया। ये खराब गेंद थी, लेग स्टंप की तरफ निकल रही थी। लेंथ भी बैट्समैन को मैसर आ गई। शॉट खेलने से बिल्कुल घबराते नहीं हैं ऑन साइड में हैदर अली। और बहुत ही ज़ोर से जो भी इनकी शॉट जाती है बहुत ही ज़ोर से जाती है, लेग साइड पे स्पेशली।
वो बढ़ गई। यहाँ पर ज़ीशान मलिक ने अपनी निस्फ सेंचुरी मुकम्मल की, 50 रन की बड़ी जारहाना और धुआंधार इनिंग्स, महज 32 गेंदों में 4 चौके और एक जोरदार छक्का लगाया। Nicely picked. That is a trademark Haider Ali shot. Beautifully done. Effortless. What a shot by Haider Ali right there. Young stunner Haider Ali. Just starts off with a bang. You saw that in T20 before too. Gets in his air, just picked it off his pads, lofted it in the air. There you saw it, the ball flying. High in the air. This is a good shot. 6 on any ground. That's such a big problem to end the over well. Just ball it right under the bat. 12 gone. It's 123 for 1. Is high in the air. This has got to be taken. Sarfaraz wants it with the gloves. He goes almost to point and takes that one. Well done. The captain makes sure that he doesn't leave the responsibility on anyone else. Wicket number 2 goes, and just when we show the partnership, it's been broken. Mir Hamza with the breakthrough right there. Looks like a change of pace right there. When try to go over mid-wicket, up in the air, Sarfaraz Ahmed with the safe hands. Nicely catch, nicely caught right there by Sarfaraz. This is the breakthrough they wanted. Another slower one, but this time it beats cover. Boundary to end the over. More questions to be asked. 160 for 2 after 15. और बोल्ड कर दिया। तो ज़ीशान सेंचुरी नहीं करेंगे। 84 रन पे सोहेल खान ने उनको पवेलियन में वापस भेजा। अच्छी बॉल, थोड़ा सा रूम दे के ऑफ साइड फील्ड को एक्सप्लॉइट करना चाहते थे, लेकिन सोहेल खान ने विकेट्स में बॉल रखी। और सोहेल खान अनलकी रहे। बॉलिंग फील्ड के मुताबिक तेज़ बॉलिंग कर रहे हैं, शॉर्ट बॉल का प्लान है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली टॉप एज लगा और बाउंड्री। अच्छी बॉल थी, वेल डायरेक्टेड थी, शॉर्ट पिच कराई और ये लकी रन्स कह सकते हैं। पुल करने की किसी पोजीशन में नहीं थे शादाब, लेकिन फिर भी बाउंड्री हासिल की। शॉर्ट बॉल शादाब ने पुल किया, कैच होना चाहिए। अनवर अली ने आसानी से कैच पकड़ा, तो सोहेल खान को कामयाबी मिली। शादाब को बता रहे हैं कि भाई मुझको पुल नहीं मार सकते। सोहेल खान आखिरी बॉल पे विकेट हासिल कर ली इन्होंने। शादाब खान अच्छी फॉर्म में लग रहे थे, अटैक करना लाजमी था, लेकिन कनेक्शन बनाया, लेकिन बाउंड्री पार नहीं कर सके। हाइट ज़्यादा पकड़ ली थी, डिस्टेंस इतना नहीं था, और अनवर अली इस तरह के कैचेस नहीं ड्रॉप करते। वेरी सेफ पेयर ऑफ हैंड्स। सामने बहुत ही खूबसूरत शॉट। उमर अमीन ने चौके के साथ नॉर्दर्न की इनिंग्स मुकम्मल की, और मेरे हिसाब से तो नॉर्दर्न बहुत ही खुश होगा जिस किस्म की उन्होंने बैटिंग की। 204 रन्स बना लिए 20 ओवर में। Well played by Northern, making good use of that batting wicket. Zishan Malik getting 84 of just 52, and he was the guy who led the charge. After him, Haider Ali 35, 20 from Umar Amin helped the side to get to 204 for 5 in their allotted 20 overs rather. And coming to the bowling, well, it was a bit of a struggle for Sindh. They gave away a lot of runs in the power play. 2 wickets for Sohail Khan and Hasnain, and a wicket for Mir Hamza. At a point, it seemed the opposition might get 230, but did well, 204. So 205 is the target. Sindh comes out to bat, and let's watch what happens.
So, looking forward to this. Live from the Multan Cricket Stadium. Here we go. 205 to win. No run, but right in the middle of the bat. Deep in the square leg is the one who can come into play. Oh, he's nicked it. He's nicked it. We heard it over here. A wide one outside the awesome. That's a big wicket. Haris Rose strikes straight away in the first over. Fantastic. Great bowling by Haris Rove. Pitching it right up. Invited the batsman to drive it. There was no feed from Sharjeel. It was just hands throwing at the ball. And good catch by Rohil Nazir. Great start by Northern. Drives that one, beautifully done, leaned into it. Azam Khan displays that one for a boundary to start off with. Nicely timed by Azam Khan. Not a bad ball actually. If you have two slips, right length the ball, invited the drive, but nicely played. It's really well played. That's superbly done into the gap. He struck really nicely. Through point 4. He smashed it actually. With on offer, which is not the right line to bowl on this pitch. And once again, the action replay, this time more of a drive rather than a cut. The bats today and the bat speed. No regard for the bowler whatsoever. Fantastic batting by Khurram Manzoor. Again, there was Fuller this time, and he didn't try to hit too hard. The foot was on the pitch of the ball, and he timed it through the cover for 4. Khurram seems to... Nicely picked up. He planted that left foot. Oh, he has no regard for pace. He's got a good hand-eye coordination, this boy. This is the shot of the day for me. Wow, this is just amazing. Full and driven pass mid-off. That's another boundary. This is entertainment here. In the power play, you're getting those boundaries and sixes going. End of the over. It's 31 for 1. That's 4. It was too short. Musa knows it. You hear that cry, no. It's just that how you keep your calm, you rightly said, not to panic if there is a good over somewhere. There will be. It's just you get value for shots with this outfield. And then you also keep remembering that the dew factor will... लेकिन आजम खान नहीं रुकने वाले. बहुत ही जोरदार वार किया. उनका सनसनीखेज छक्का. Slog sweep for 6 आजम खान की तरफ से. बहुत बड़ा 204 रन्स पे ज़्यादा हर ओवर में बाउंड्री तो आपको चाहिए. तो पावर प्ले होने के बावजूद अभी इनको अपना पूरे अटैक मोड पे तो रहना होगा. आप जैसे देखें, slog sweep for 6 आजम खान की तरफ से. And again over extra cover. Big 6, 2 पे 2. शादाब खान under pressure. यहाँ विद द स्पिन गए, बिल्कुल खातिर में नहीं ला रहे. हालांकि शादाब ने गेंद को हवा दी थी. और इस बार शॉर्ट गेंद को कट किया. ये वाइड गेंद थी विद द स्पिन. कि बहुत ज़्यादा विड्थ ऑफर की थी और मनमानी करने का मौका मिल गया. चौका लगाकर आजम खान ने अपनी धुआंधार निस्फ सेंचुरी मुकम्मल कर ली. इस बार आजम खान कैच आउट हो जाएंगे. और ये 2 फील्डर्स की कोशिश रंग लाई. मूसा खान ने गेंद को नीचे नहीं गिरने दिया.
डेंजर मैन आजम खान आउट हो गए। या निस्फ सेंचुरी मुकम्मल करने के बाद हम कह सकते हैं कि कैरिड अवे। बॉल लेंथ खींच दी, हवा में गई, स्लिप अप हो चुका था, थोड़ी सी ब्रेक हुई, थोड़ी सी दूर थी और 1 too many आजम की तरफ से। Smashes it back. This time Sarfraz gets the boundary. Clever shot. Slightly short that delivery, but he made sure that he hit it straight past Sarfraz. Clubbed it straight. Yeah, half chance. A difficult one for Shadab, but some pressure off Sindh. And that's it. That's the way to go. Amir with pace on the ball. Khurram Manzoor gets to his 50 in style. First 6 off his innings. He'll need a few more, but that was a fantastic shot. Giving some room, smashed it down the ground for 6. A beautiful way to bring up 50 for Khurram Manzoor. Much needed boundary and a strike. Full swing of the bat, beautifully hit. This time he tries to go over mid-off, and Amir gets Sarfraz. So Sarfraz couldn't really get going. It's Mohammad Amir combined with Shadab. There was no other option. Eyeing that mid-on area. Fielder was in circle, not a bad option, but couldn't execute well. Shadab Khan will never drop these. गेंद काफ़ी ऊपर लगी, लेकिन 2 फील्डर्स के दरमियान गिरी। ज़रूरी 4 रन्स मिल गए। हमें के लिए लगा था कि शायद दोनों के दरमियान गलतफहमी पैदा हो गई थी। बिल्कुल अच्छा शॉट, बहुत ज़बरदस्त शॉट। लेंथ को पहले रीड किया और मिड ऑन के ऊपर से ये हिट लगाई। मिड ऑन क्योंकि ऊपर था। इसके बावजूद करने की कोशिश की और मुंह की खाना पड़ी मोहम्मद आमिर को। थर्ड मैन के फील्डर फाइन थे और जो ऑफ साइड स्वीपर थे वो तकरीबन एक्स्ट्रा कवर पर थे। बहुत बड़ा गैप है यहाँ, इसी में गेंद को भेज दिया अनवर अली ने। बहुत ही अच्छे तरीके से मैनेज किया। वाइड यॉर्कर था, आगे बढ़े थे लेकिन टाइम कम था, लेकिन प्लेसमेंट बस एक्सेप्शनल। आसान शॉट नहीं था ये, क्योंकि वो डाउन द पिच आए थे, टाइम कम था उनके पास, लेकिन it was hard to put bat on the ball. Good result. फुल टॉस सीधा खेला फील्डर के हाथों में और नवाज ये कैच ले उड़े। हारिस गिर गए हैं, काफ़ी ज़्यादा तकलीफ में दिखाई दे रहे हैं। विकेट की खुशी भी नहीं मना सकते। अनवर अली जो आखिरी उम्मीद बनकर उभर रहे थे सिंध के लिए, वो लो फुल टॉस पर आउट हो गए। टाइम करना चाह रहे थे। हारिस की ये 10वीं विकेट थी इस कैच की बदौलत इस चैंपियनशिप में। और फिर दूर गेंद फेंकी और वाइड पर, तकरीबन वाइड पर ये स्टंप आउट हो गए, या फिर ये कॉट बिहाइंड करार दिया है, क्योंकि इनको बॉलिंग एंड पर खड़े हुए अंपायर ने आउट करार दिया। उनकी उंगली फजा में बुलंद हुई। बिल्कुल मेरे ख्याल में कॉट भी एंड हुए हैं और इसका ये मतलब है कि वाइड भी नहीं होगा। और ये लीजिए पहला छक्का इस ओवर का, बहुत दूर तक इस गेंद को पहुंचा दिया स्टैंड में। शाम के वक्त लेफ्ट आर्म फिंगर स्पिनर के लिए बॉलिंग करना आसान नहीं है। ड्यू के सबब दानिश अजीज बहुत देर से आए, बहुत दूर छक्का लगाया। देखिए दो छक्के यहाँ पे लगे तो ज़रा मैच इंटरेस्टिंग हो जाए। तो की जाती। एक और विकेट का मौका है। अच्छा लो कैच लिया बाउंड्री राइडर आसिफ अली ने। एक और विकेट गिर गई। सुहेल खान आउट होने वाले बैट्समैन हैं। एक अच्छी टीम की निशानी है कि वो आखिरी बॉल तक अपने स्टैंडर्ड्स को हाई रखती है, और वही आसिफ अली ने दिखाया कि इवन के मैच
ओवर हो चुका है, लेकिन दानिश अजीज ने इसे लॉफ्ट किया सामने की तरफ और इस तरह ये रस्मी कार्रवाई पूरी हो गई। ये मैच आखिरी गेंद तक तो नहीं गया लेकिन आखिरी ओवर तक ज़रूर गया। काफ़ी दिलचस्प मुकाबला हुआ इन दो मजबूत टीमों के दरमियान। Once again, the same story in the tournament for Sindh. So close yet so far. 191 is what they managed. It was 64 from Khurram, batted almost throughout the innings but couldn't get the side through the crossing line. Azam Khan's brilliant 55 of 28 was the highlight of the chase, and then followed by a brisk 37 of just 17 from Anwar Ali, but just wasn't enough. 191 for 7 is what Sindh managed. Looking at the bowling, Haris Rauf and Mohammad Nawaz along with the captain Shadab getting 2 wickets apiece, and Mohammad Amir, who came into the side for the first time in the tournament, got 1 wicket, and they managed to save the score that was on board. Northern batting first, 204 for 5, Zishan's 84 of 52. In reply, Sindh getting 191 for 7 with Azam Khan's 55, Khurram's 64. Northern yet again won a match by 13 runs. Thank you very much for joining the highlights. We'll see you next time. Until then, goodbye.